Hello and welcome to our Vision Institute. I welcome you all to our YouTube channel. Welcome to Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials. Like every day, I'm again here with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials, and we'll see today's first. We'll start our session with a motivational line. A very good morning to you all. What is our first motivational line for today? Our motivational line for today is don't count the days, make the days count. So, this has been said by a great personality. Um, what is the meaning of this motivational line? Let us first understand that. This line is a very meaningful line. So, what is the meaning of this line? Don't count your days. So, what people do that it's been 6 months that I'm not doing anything. It's been 7 months that I'm not doing anything. It's been 8 months that I'm not studying a little bit, a single thing I'm not studying. So you should not count your days. You should not count anything, any days of your life. Make the days count. So, what is the meaning of make the days count? So maybe that you are living for. We have got our lives. This is for a very short span of time. So we have got our lives. We are in this earth. We will live for a very short span of time. So we should do something which will which will make people remember us, right? So we should make our days count. मतलब हम लोगों को दिन गिनना नहीं चाहिए. हम लोग जितना दिन गुजार रहे हैं अपने लाइफ के या जितने दिन जिंदा है उन दिनों को अच्छे से गुजारे, उन दिनों में ऐसा कुछ कर जाए जब ताकि लोग हमें याद रखें, लोग हमें याद करें, लोग हमारे बारे में ये बोले कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल इतने अच्छे काम किए हैं. सो यू शुड नॉट जस्ट काउंट योर डेज, यू शुड मेक योर डेज काउंट. आपको ये करना पड़ेगा कि दूसरे आपके जीवन के दिन जो है वो गिनेंगे. बस आप इतने साल आ गए, काम कर लिए, वो आप गिनोगे तो दैट डजेंट मैटर. ये सभी करते हैं, लेकिन दूसरे लोग आपके ज़िंदगी के दिन कब गिनेंगे? जब आप ऐसा कुछ कर जाओगे जो किसी ने नहीं किया है आज तक, राइट? Let us see our first vocabulary word for today. Our first vocabulary word for today is enduring. Enduring is an adjective जिसका meaning होता है चिरस्थायी. Okay, so what is the meaning of enduring? Enduring means adjective and it means chirasthai, and in English you can say lasting over a period of time or durable. Something that is durable, that means it will exist, it is going to stay for a very long period of time. That is called enduring. Synonyms इसके हो सकते हैं undergo, go through. Okay, antonyms can be fade, short lived. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? Having been in chronic pain for 20 years, the enduring man was ready to give up on life. So this man was in chronic pain for 20 years. 20 साल इस आदमी ने बहुत से पेन में अपनी ज़िंदगी गुजारी है. Now the enduring man was ready to give up on life. अभी ये जो आदमी है वो अपनी ज़िंदगी से पीछा छुड़ाना चाहता है. He doesn't want to live anymore. Right, our next vocabulary word is languid. Languid is an adjective जिसका meaning होता है निस्तेज. Okay, in English you can say having or showing a declination for physical exertion or effort, which means of a person, manner or gesture. You can say having or showing a declination for physical exertion or effort. That is called languish. In Hindi you can say it's nistej. In Bengali also we say nishtej. Synonyms इसके हो सकते हैं relaxed, unhurried. Antonyms हो सकते हैं energetic, active. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? After a stressful day of work, I am going to enjoy a languid walk through the quiet park. So, पूरे दिन स्ट्रेस वाले काम करने के बाद मैं क्या करने वाली हूँ? आई एम गोइंग टू एंजॉय अ लैंग्वेज वॉक थ्रू द क्वाइट पार्क. ये जो पार्क है ये एकदम शांत पार्क है, इसमें मैं एक अच्छा वॉक लेने वाली हूँ पूरे स्ट्रेसफुल डे काम करने के बाद.
So we have our first idiomatic expression for today. What is it? So see, this is something that we use. ये जो आप देख रहे हैं ये idiomatic expression sentence में part में use नहीं होता है. यही एक sentence है, right? It is not used in a part of this as a part of the sentence. A bird in the hand is worth two in the bush. तो ये खुद ही एक idiomatic expression है and ये एक sentence भी है. We say this when दिस काइंड ऑफ मीनिंग इज देयर, तब हम लोग ये जो है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन ये बोलते हैं. बट डोंट थिंक दैट जैसे कि हम लोग इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस कर चुके हैं जो कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, दिस इज अ सेंटेंस, दिस इज अ फुल सेंटेंस, राइट? So what is it? A bird in the hand is worth two in the bush. What is the meaning of this idiomatic expression? It means what you have is worth more than what you might have later. तो आपके पास अभी जो है ये इसका बहुत दाम है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मूल्यवान है जो कि आपको बाद में मिलने वाला है. आप नाउ लेट मी गिव यू लाइफ एग्जाम्पल. जैसे कि वी से दैट मुझे 2 साल बाद मुझे ये नौकरी मिलने वाला है. सो वी आर ड्रीमिंग ऑफ आवर ड्रीम जॉब. मे बी हमें अपना ड्रीम जॉब मिलने वाला है 2 साल बाद, लेकिन अभी भी मैं एक काम कर रही हूँ. आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब राइट नाउ, लेकिन मैं उसको लेकर सपना देखती हूँ क्योंकि दैट इज़ माई ड्रीम जॉब, राइट? सो यू शुड अंडरस्टैंड जो आपके पास अभी है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है. उससे तुलना करें कि आपको जो मिलने वाला है 2 साल बाद, उससे अभी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्थ है, वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है आपके पास, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट है. यू शुड रिस्पेक्ट योर प्रेजेंट. If you keep thinking about your future or what you will get in your future, you will lose hold of your present, right? So let us see our next vocabulary word. Our next word is steering. स्टीरिंग इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है सहगर्मी और या फिर क्रियाशीलता. यू कैन से दिस इज स्टीरिंग. एंड स्टीरिंग का मीनिंग घोटना भी हो सकता है. वी स्टीर समथिंग, सो वी स्टीर शुगर इन मिल्क, राइट? सो यू कीप स्टीरिंग द बैटर, राइट? वी से दिस वाइल वी मेक केक, सो वी आर स्टीरिंग द बैटर. दैट मीन्स हम बैटर को मिक्स कर रहे हैं. दैट इज स्टीरिंग समथिंग. स्टीरिंग का मीनिंग वो भी हो सकता है, स्टीरिंग का मीनिंग ये भी हो सकता है, which means in English causing excitement or strong emotion or you can say rousing. Synonyms इसके हो सकते हैं exciting, thrilling. Antonyms हो सकते हैं boring, pedestrian. Sentence में कैसे यूज करें? Dressed in a simple and austere white, the students filled the auditorium with their stirring songs. तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल एंड वाइट कलर के यूनिफॉर्म पहने हुए स्टूडेंट्स आए थे एंड द स्टूडेंट्स फिल द ऑडिटोरियम. पूरे ऑडिटोरियम के उन लोगों ने फिल कर लिया था एंड इट फिल्ड विथ देयर स्टीरिंग सॉन्ग्स. दैट मीन्स द सॉन्ग्स वर वेरी एक्साइटिंग, वेरी ब्यूटिफुल. दैट इज कॉल्ड द स्टीरिंग सॉन्ग्स. आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज एपोकल. एपोकल इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण. That is called epochal. महत्वपूर्ण, you all know this meaning in Hindi. महत्वपूर्ण, which is very important or of a great significance, right? Synonyms can be important, significant. Antonyms can be inessential. How to use it in a sentence? The singer knew his song wasn't epochal after it was only downloaded 10 times. तो ये जो सिंगर है इनको बिल्कुल पता चल गया था कि इनका सॉन्ग जो है वो बिल्कुल एपोकल नहीं है. मतलब जो गाना इन्होंने गाया था, द सॉन्ग वॉज नॉट एट ऑल ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं था, मतलब लोगों को इतना पसंद नहीं आया, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था. सो इसके क्यों पता चला? बिकॉज इट वॉज डाउनलोडेड ओनली 10 टाइम्स. तो बस 10 बार ये जो सॉन्ग है ये डाउनलोड हुआ था उनका. Our next vocab is concurrence. Concurrence is a noun जिसका meaning हिंदी में होता है सहमति. In English you can say the fact of two or more events or circumstances happening or existing at the same time. तो दो चीज़ें सेम टाइम पे हो रहा है, that is called concurrence or it's concurrent, right? Concurrent is verb. Synonyms इसके हो सकते हैं concordance, cooperation, coincidence. Antonyms हो सकते हैं dissonance, discord. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? A staff meeting ran in concurrence with a new hire meeting.
that was also happening at 9 a.m. So there was two meetings running side by side. That means which was happening at the same time. It was a staff meeting as well as, yeah, it was a staff meeting as well as a new hire meeting. So there was a hiring meeting also going on, happening at 9 a.m. So two meetings occurring at the same time. Our next vocab is despotic. Despotic is an adjective जिसका meaning होता है निरंकुश, or you can say in English associated with or typical of a tyrant. That is called despotic. Right, synonyms इसके हो सकते हैं autocratic, dictatorial, totalitarian. Antonyms can be democratic, accountable. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? Many employees have resigned in order to escape the rule of their despotic manager. तो एक डिस्पोटिक मैनेजर को एस्केप करने के लिए, मतलब इससे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत से एम्प्लॉयज़ ने रिसाइन कर दिया, राइट. आवर नेक्स्ट वोकैब, okay, so we have our next idiomatic expression, right. Our next idiomatic expression is a penny for your thoughts. So what is the meaning of this? So I have a penny for your thought. That means tell me what you are thinking. This is the meaning of this idiomatic expression, that tell me what you are thinking. That is, I have a penny for your thoughts, right. Our next vocabulary word is grisly. Grisly is an adjective जिसका meaning होता है क्रूर और डरावना, right. So in English you can say causing horror or disgust. That is called grisly. Synonyms can be gruesome, ghastly, frightful, horrid. These can be the synonyms. Antonyms can be pleasant, attractive. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? It takes the makeup artist several hours to apply the cosmetics that turn the actor into a grisly monster. तो मेकअप आर्टिस्ट को बहुत से घंटे लग जाते हैं कॉस्मेटिक्स अप्लाई करके ये जो एक्टर है इनको एक मॉन्स्टर बनाने में, राइट. आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज स्प्लर्ज. स्प्लर्ज इज अ वर्ब जिसका मीनिंग होता है हिंदी में पैसे उड़ाना. सो यू आर स्प्लर्जिंग मनी, right. In English you can say to spend extravagantly or ostentatiously. Synonyms can be squander, fling, dissipate, disburse. These can be the synonyms. Antonyms can be accumulate, hoard, conserve, preserve. These can be the opposite words. So how to use it in a sentence? If I win the lottery, I can splurge and buy anything I want. तो अगर मैं लॉटरी जीत जाती हूँ तो मैं कहीं पे भी पैसा खर्च कर सकती हूँ, कुछ भी खरीद कर सकती हूँ, राइट. आवर नेक्स्ट वोकैब इज रिफ्रैक्टरी. ओके, सो आवर नेक्स्ट वोकैब इज रिफ्रैक्टरी. रिफ्रैक्टरी इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है दुराग्रही. In English you can say not responsive or difficult to manage. That is called refractory. Synonyms can be recalcitrant, insubordinate, intractable. Antonyms can be obedient, manageable. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? Because the prisoner acts in a refractory manner, he is accompanied by 4 guards whenever he leaves his cell. तो प्रिजनर मतलब ये जो जेल में ये जो आसामी रहता था, सो ही वॉज अ प्रिजनर accused. So due to his refractory acts, तो इसके refractory acts के वजह से दैट मीन्स ऐसे काम जो कि मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट. तो इसके ऐसे काम के वजह से ही इज़ एक्म्पनीड बाय 4 गार्ड्स. ये जब भी अपने सेल से बाहर निकलता था इसके साथ 4 गार्ड रहते थे हमेशा, राइट. So we have our next idiomatic expression. What is it? A penny saved is a penny earned. What is the meaning of this? It means money you save today you can spend later. So what is the meaning of this idiomatic expression? A penny saved is a penny earned. That means if you save money today you can spend that later. That is called a penny saved is a penny earned. Right? So we have our last vocab today. Our last vocab for today is bedeck. बेडेक इज़ अ वर्ब जिसका मीनिंग हिंदी में होता है सजाना, और यू कैन से टू डेकोरेट और कवर. सिनोनिम्स कैन बी एडॉर्न, बेडिजन, एम्बेलिश, एम्ब्लेज. Antonyms can be denude, blemish, deface, disfigure. These all can be the antonyms. How to use it in a sentence? The ballroom was bedecked with flowers for reception. तो बॉलरूम को फ्लावर्स से सजाया गया था रिसेप्शन के लिए. इट वॉज
it was covered with flowers. That means it was bedecked with flowers, right? So this is our top 10 vocabulary words for today. I hope you liked it and you liked the session. If you like the session, to click on the like icon and comment in our videos how you are liking the videos, how much you are liking, whatever problems you are facing, you can comment to me. I will be there answering your questions. And if you are new to our channel, do subscribe our channel and click on the bell icon so that you get all the recent updates. So see you next day. Till then, take care. Goodbye.